Fine. Okay. So let us start our discussion and let us talk about. So we know what is gradient descent, right? If you talk about maxima and minima over there, basically we don't talk about maxima here. We talk about the minima component, and we have seen that partial derivative formula, right? So the previous day, the formula that I was giving you was W new is equal to W old minus alpha multiplied by partial derivative of loss with respect to your W old. You can either say loss or you can say error component, does not matter. This was the formula. And with respect to this formula, I gave you the derivation that it is not essential that the weight updation will always be increasing. It can be decreasing as well. Kuch bhi ho sakta hai, right? So this is something that we have seen in the previous class. Now, this formula or whatever formula we have discussed, that was with respect to vanilla gradient descent. Vanilla gradient descent, which is also known as full batch gradient descent. Okay. This was the first kind of gradient descent which we have discussed. आज बात करेंगे about something known as mini batch gradient descent. Then we will talk about something known as stochastic gradient descent. And finally, we will also talk about something known as adagrad. So let us talk about mini batch gradient descent. Now we know that if I'm talking about vanilla gradient descent, and let's say there are n data points. Okay, n data points we are having. It can be 10, 20, 50, 100, kuch bhi ho sakta hai. So n number of data points I am having. Whenever you are talking about vanilla gradient descent, because it is a full batch gradient descent, what happens is the entire n number of data points are going to be considered, and this minima that you draw or this minima curve that you create so as to reach at the lowest possible position. Yahan par, whenever you are computing the loss, let's say this is the position from where you are starting, let's say A, and when you are taking small steps and when you are trying to reach at the global minima, at that point of time, the number of data points that you are choosing is total number of data points. So n number of data points agar hai, to सारा का सारा data point हम लोग choose कर रहे हैं in order to compute the loss component. Okay, this is the idea of vanilla gradient descent. But in case of mini batch, what happens is out of this n, you will be considering k points. Okay, so here you will not consider the entire n number of data points in case of mini batch. You will consider k points, and always remember k is less than n. है ना, क्योंकि k मान लो अगर n 100 है तो k will be something like 20 or 30. Okay, it will be a subset of your n. Fine. So when you are using the entire data set, it takes the shape of vanilla gradient descent. When you are considering k out of, I can say, n data points, ठीक है, अगर आप k data points choose कर रहे हैं, so at that point of time, you are talking about mini batch gradient descent. सब में loss component ही minimize हो. Okay, each and every time the loss component is going to get reduced significantly, but the way how it is going to get reduced is going to differ. So mini batch में क्या होगा? First, let's say if I'm telling n is equal to 100, k is equal to 20. So first epoch में the first 20 data points will be chosen, loss will be computed. Then second epoch में next 20 data points will be chosen, epochs will be carried on, and then your loss component will be written down. तो इस तरह से आपका ये कंटिन्यू होने वाला है, ये बढ़ते चलेगा. Fine. This is the case of mini batch. And what about stochastic? Stochastic में you will only choose one data point at a time. Okay, so one out of n data points will be chosen at a time. ठीक है, one out of n data points will be chosen in case of stochastic gradient descent. Again, यहाँ पे भी सब कुछ same ही होगा. Loss component is going to be calculated. Weight updation is going to take place using partial derivatives, and finally, the output that you are going to get will be having less component of error or lower value of error. That is what you can understand.
ठीक है, ये 3 चीज समझ में आया। फुल बैच में क्या हो रहा है, मिनी बैच में क्या हो रहा है, स्टोकेस्टिक में क्या हो रहा है, yes sir, है ना? फाइन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। ऑब्जेक्टिव तीनों का सेम है, बस द डेटा पॉइंट्स दैट दे आर कंसिडरिंग एट अ टाइम इज वेरिंग. Okay, so that is the idea. Now coming to the last component, which is AdaGrad. AdaGrad में क्या होता है? AdaGrad is much more superior to gradient descent. Be it mini batch, stochastic or vanilla, कोई भी हो, AdaGrad is much more superior than these, you can say, conventional techniques. And why is it so? It is because यहाँ पे, in case of AdaGrad, we can regulate the alpha component, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था. कहने का मतलब है कि if you are talking about gradient descent, whatever variant of gradient descent you are talking about, वहां पर if you are choosing alpha, what is alpha? It is the step size. So if you are choosing alpha is equal to 0.1 or 0.01, whatever. मान लो I am saying alpha is equal to 0.01. So this alpha is equal to 0.01 or this step size of 0.01 is going to remain uniform. यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, it is going to be uniform. You can see the step size, they are uniform. They are not like छोटा बड़ा नहीं. It is all uniform that you are having. Okay. That is why I am saying that you cannot regulate the value of alpha here. Okay. But in case of AdaGrad, you can do that. You can regulate the value of alpha. कहने का मतलब है कि if you are starting from point A, okay, if you are starting from point A and your objective is to reach at, let's say, this point, okay, the minimum point, what you can do is you can keep the value of alpha high initially. Okay, मान लो बड़ा बड़ा alpha का size रखेंगे, and when you are about to reach at the global minima, you can significantly reduce the value of your I can say alpha, so that you stop yourself exactly at the global minima position. Something like this I'm saying. I will draw another figure here. मान लो your objective is to reach at the global minima, you are somewhere here. So initially, because see, यहाँ से लेकर के यहाँ तक you have to reach, right? Let's say this is the global minima position G. So if you want to reach at G, you are able to find that A is very far off from G. काफी distance है A and G के बीच में. So let's say if you are starting from, let's say, Delhi, okay, you are starting from Delhi and you have to reach at, let's say whatever place, some place. Let's say you are supposed to reach at Lucknow. Okay, so जब आप दिल्ली से चल रहे हैं, at that point of time, let's say you are traveling through some car or something like that. So when you are starting from Delhi and you know that you have to stop at Lucknow, okay, what you will do is you will keep the speed higher initially, and जैसे जैसे आप लखनऊ पहुंचने लगेंगे, मान लो यूपी के आप टेरिटरी के अंदर एंटर करने लगे and you are able to figure out that you are quite close to Lucknow now. Let's say Lucknow railway station or Lucknow airport, whatever, if you want to go there. So when you will realize that, yeah, I am very close to Lucknow railway station, what you will do is you will significantly try to slow down so that you are able to stop exactly at the railway station. You don't want to skip that part, है ना? You don't have to skip that part. तो इसीलिए the same objective is going to be applied here. मान लो कि अब दिल्ली से यहाँ तक ये जो point है, मान लो this is point X. So from Delhi to point X, what you will do is you will keep the speed of your car high, let's say 60 kilometers per hour. Okay, but once you understand that you are at point X and from point X, Lucknow railway station is not very far away. What you can do is from this point X to L, इतना जो छोटा सा distance है, इसके लिए you will keep a small speed. So let's say the speed will be approximately 20 kilometers per hour. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि you are able to regulate your speed, right? You are able to regulate your acceleration of car, and subsequently what happens is your objective of reaching at Lucknow railway station is fulfilled कम टाइम में. मान लो अगर 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ही थ्रू आउट रखते हैं, ओके, तो क्या होता है कि आपको अभी अगर 1 घंटा लग रहा है दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में, तो मे बी आपको 2 या 3 घंटा लग जाता है पहुंचने में, क्योंकि आपका स्पीड बहुत स्लो है. नो डाउट यू विल रीच एट लखनऊ रेलवे स्टेशन, एग्जैक्ट वहां पे आप रुक पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन पहुंचने में टाइम बहुत लग गया ना. सो दैट शुड बी अवॉइडेड.
सिमिलरली मान लो अगर 60 किलोमीटर पर आवर पूरा थ्रू आउट रखेंगे तो देर आर चांसेस दैट यू मे स्किप द लखनऊ रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपको सकता है वहां पर नहीं रुक पाए एग्जैक्टली वहां पर, है ना। तो देर आर पॉसिबिलिटीज दैट यू माइट स्किप द लखनऊ रेलवे स्टेशन पोजीशन वेयर यू हैव टू रीच, ठीक है। तो वही चीज एडाग्राड में भी होता है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियली व्हेन आई एम स्टार्टिंग और व्हेन आई एम एट पॉइंट ए, आई विल कीप माय स्टेप साइज ह्यूज, ओके, स्टेप साइज ह्यूज रखेंगे। एंड उसके बाद जब ये जी पॉइंट पे पहुंचना रहेगा तो क्या करेंगे, छोटा छोटा स्टेप्स ले लेंगे, सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव गोल जी पर पहुंच भी जाएं, एग्जैक्टली वहां पे रुक भी जाएं एंड आपका काम भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू थ्रू आउट सेम नहीं रहेगा। इतना दूर के लिए लेट्स से यू विल हैव अल्फा ओल्ड, एंड यहाँ पे इतना दूर के लिए यू विल हैव अल्फा न्यू, ठीक है। न्यू अल्फा का कुछ वैल्यू आ जाएगा, ओके। दिस इज द difference between conventional gradient descent and your undergrad, and that is why in most of the cases you will find that I will be using undergrad only, क्योंकि आपको भी ये चीज रियलाइज हो रहा होगा कि gradient descent से ही इंस्पायर्ड है ये चीज है, इट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू और पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट नहीं है, बट या इट इज समथिंग डिफरेंट, थोड़ा बहुत अलग भी है, इसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये 4 टॉपिक समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। So AdaGrad is there, okay. Now what we will do is we will now jump into recurrent neural network. We will try to understand what recurrent neural network actually has to offer, and then आज के क्लास में पूरा recurrent neural network को cover करने की कोशिश करेंगे, and in the subsequent classes we will also try to understand how NLP is going to work. So you can expect next week onwards आपका NLP चालू हो जाएगा, fine. So recurrent neural network में कुछ भी discussion नहीं हुआ है, so I will keep things very raw, very from the very initial part I will be taking the things, and we will be trying to understand different aspects of recurrent neural network, ठीक है। तो just give me a second and then we will start. ठीक है, fine. So I guess अभी तक सब कुछ crystal clear है, and now we are good to start with our discussion on recurrent neural networks, which is also known as RNN. Fine. अब देखो, in case of recurrent neural networks, what happens is the input that you give, okay, the input that you give to some RNN model is always going to be text in nature, ठीक है। लेकिन exactly text हम लोग देते हैं नहीं, okay. What we do is, let us assume you have a text file, okay. You will convert that text into number, okay, or let's not call it number, let's call it vector, क्योंकि उसको vector ही कहा जाता है technical terms में। So that text will be converted to vector. What is vector? It is nothing but number, okay. कैसे किया जाएगा, I will explain you. So text को number में या vector में convert करेंगे and then उसको RNN में feed किया जाएगा as input. Similarly, अगर sound है आपके पास या voice है, sound को क्या करेंगे, text में convert करेंगे, text को क्या करेंगे, vector में convert करेंगे, and then this vector will be fed to the RNN model, ठीक है। ये flow हमेशा याद रखना, it is not the text which is fed directly to the RNN. हाँ, अगर कोई बोले कि RNN में input किया जाता है, you will always say text, but always at the back of your mind remember कि text बोल तो रहे हैं लेकिन input जा क्या रहा है, vector जा रहा है, and what is vector? It is a number. So even though I am saying text every time, it is not exactly text, it is number which is being actually fed to the RNN, ठीक है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि ये नंबर हम लोग क्यों फीड करते हैं टेक्स्ट, सॉरी ये नंबर क्यों फीड करते हैं हम लोग इन RNN. So see what happens is, if you are talking about computer science or any sort of your algorithmic
थिंकिंग बेसिकली, वहां पर क्या होता है कि एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स कोड और व्हाटएवर यू हैव learned through Python or whatever, you would have noticed कि we basically deal with numbers every time. We, in case of algorithms, don't entertain alphabets or we don't entertain text corpus as such. And because of which what happens is if you are giving text as input, it might happen कि it will not be able to realize what it is supposed to do. ठीक है? And that is why you are supposed to convert that text into number and that number gets fed to RNN. एक extra information I am giving you which is not a part of your syllabus but still थोड़ा समझ लो. क्या होता है कि आरएनएन के साथ साथ हम लोग जब डेटा साइंस का बात करते हैं, कंप्लीट डेटा साइंस या कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप तो एक पार्ट कर रहे हैं, एनएलपी एक पार्ट कर रहे हैं ऑफ एआई, बट इफ यू लर्न एंटायर एआई समडे, you will find that there is something known as CNN also. जैसे RNN होता है वैसे ही there is something known as CNN. CNN में क्या होता है, image is given as input. Okay, so input क्या होता है, image. So image is colorful in nature, right? Color image will be given as input. This color image will be converted to black and white image, or you can say grayscale image. Okay, so grayscale में convert किया जाता है black and white में, then it is converted to its pixelated format, pixels. Okay, 0 से 255 पिक्सल होता है. So its pixel format में इसको convert किया जाता है, and by saying that this grayscale image is getting converted to pixel, indirectly I am trying to say that ये जो image था उसको क्या कर दिए, number के format में represent कर दिए, and then this pixel which will either be in this range 0 से 255, इस range के साथ जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, इमेज को पिक्सल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग CNN मॉडल में डाल देंगे. ओके, सो एवरी टाइम यू आर रियलाइजिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग नंबर्स एज इनपुट, है ना. अगर CNN का बात किया जाए तो यू कैन से दैट या इन केस ऑफ CNN वी गिव इनपुट एज इमेज, इन केस ऑफ RNN वी गिव इनपुट एज टेक्स्ट. लेकिन बैक ऑफ योर माइंड यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन दिस पिक्चर वेरी क्लियर दैट टेक्स्ट बोल तो रहे हैं, but that text has to be converted to number in between, and then only it will be able to work as input to your RNN model. Similarly, CNN में भी, हालांकि CNN is not a part of the syllabus, so you can ignore that part, but I had to show you कि ये बस RNN में नहीं होता है, सब में ही होता है. ठीक है, तो टेक्स्ट को क्या करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको प्रोवाइड करेंगे टू द इनपुट. Another thing that you should be knowing with respect to recurrent neural network is that recurrent neural network के अंदर, just a second, recurrent neural network के अंदर you will find कि the input that you are having, the text corpus, okay, that you are having, the text input that you are having, they are dependent at times and they are independent at times. कहने का मतलब है कि in case of RNN the input may be dependent, may not be dependent. ठीक है, I'll give you examples of these. क्या कहने का मतलब है मेरा. Also the input size may or may not be same. ठीक है, ये दो पॉइंट को हम लोगों को समझना है, ये दो पॉइंट को याद रखना है. कहने का मतलब है, if you consider the first point which says input may be dependent, may not be dependent. For example, let's say you have statement 1 here. Okay, statement 1 says that today is a holiday. ठीक है, statement 2 says today is Sunday. ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ, रिलेशनशिप ये एस्टैब्लिश हुआ कि संडे को छुट्टी होता है, और वी कैन से दैट वी हैव हॉलिडे ऑन संडेज. ओके,
तो ये जो स्टेटमेंट है S1 एंड दूसरा स्टेटमेंट जो है S2, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हाउ? Through S1 I can say that S2, which talks about Sunday, is a holiday or is a weekly off, whatever. Okay, so that is why we can say that these two statements are dependent on each other. Similarly, मान लो एक statement 3 है which says I am planning to visit my hometown next week. ठीक है, या मान लो यहीं तक होम टाउन लिख रहे हैं. ठीक है, तो अब ये होम टाउन विजिट कर रहे हैं, इसमें कुछ खासा रिलेशनशिप है नहीं कि हॉलीडे हो या संडे हो तभी विजिट करें. अगर मान लो कुछ बहुत इमरजेंसी है, ओके, या मान लो कोई शादी है या कोई ऐसा कल्चरल इवेंट है, तो मे बी आई विल टेक अ लीव. ओके, वी गेट लीव एट आवर ऑफिस, सो वी विल बी टेकिंग लीव, पेड लीव या कुछ भी, एंड वी विल बी विजिटिंग आवर होम टाउन एज पर आवर रिक्वायरमेंट. अगर बहुत एसेंशियल है तो वी विल डू दैट. ओके, डायरेक्टली कोई सेंस नहीं बनता है कि हॉलीडे में ही होम टाउन जाएंगे या हॉलीडे में ही संडे होगा, संडे को ही होम टाउन विजिट करेंगे. नॉट एसेंशियली, राइट? तो स्टेटमेंट 3 is not having a direct relationship with S1 and S2, but S1 and S2 आपस में you can see that they are dependent on each other somehow, right? So इसीलिए I'm saying that whenever you are talking about RNN, the input statements that you have, which are also known as input sequences, those sequences may be dependent on each other, may not be dependent on each other. ठीक है, this is point number 1. ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, so this is point number 1. Point number 2 says input size may or may not be same. Okay, ये भी समझ में आ रहा है यहीं से. देखो, input size का मतलब क्या है? The words which are there in your statement. For example, अगर statement 1 consider करें, so statement 1 has 1, 2, 3 and 4. 4 words it is having. Similarly, S2 में we are having 3 words. 1, 2, 3. Statement 3 में we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words. ठीक है, 7 वर्ड है. कहने का मतलब है all these 3 statements that we are having, they are having different size. Okay, सबका साइज अलग है. किसी में 7 वर्ड है, किसी में 3 वर्ड है, किसी में 4 वर्ड है. Okay, similarly कोई ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें 3 ही वर्ड हो या 4 ही वर्ड हो. Right? You can simply imagine of those examples by yourself what I'm trying to say. Okay, so size means the number of words that are there in your input statement, and that size may be same, may not be same. Okay, so these are 2 very important points that one should be aware of with respect to recurrent neural network. अब जो next चीज हम लोग बात करने वाले हैं, that is again very interesting, which is somehow related to this point only, कि जब size same है, मान लो there are 2 statements which are having same length. Okay, length मतलब same number of words. 2 statement है, दोनों में 4-4 वर्ड है, ये दोनों में 5-5 वर्ड है, तो things are very good, things are fine. But in case that is not the scene, okay, मान लो ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे you can find S1, S2 and S3, 3 statements है हम लोगों के पास, and all 3 of them are having different words. Okay, word count तीनों का अलग है. So जब ऐसा सीन रहे, I am just writing S1 here, S2 here and S3 here. तो मान लो S1 में कितना वर्ड्स है? 4 वर्ड है, so I will write 1, 2, 3, 4, ये 4 वर्ड हो गया. S2 में क्या क्या है? 3 वर्ड है, so I am just writing spaces here. You can fill them up later on if you want. And S3 में क्या है? 7 वर्ड है, so I will give 7 spaces. Okay. Now you find here that there is some sort of irregularity with respect to the length of the statement. Okay, S1, S2 and S3 का length बराबर नहीं है, or you can say size बराबर नहीं है. So because we have that problem, size is not same. So what we will do is we will do something known as zero padding. Okay, we will do something known as zero padding.
अब जीरो पैडिंग में क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट सबसे लंबा है उस स्टेटमेंट का लेंथ को पकड़ लो, बाकी जितना भी स्टेटमेंट है उसमें जितना भी गैप रह जा रहा है उसमें जीरो डाल दो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे S3 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स है 7, ओके। S1 में 4 वर्ड है, 5, 6, 7, 3 और ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या डालेंगे 0 0 0। सिमिलरली S2 में 3 ही वर्ड है, सो वी आर सपोज टू ऐड 4 मोर वर्ड्स हियर सो दैट वी कैन मेक इट 7 काउंट में, है ना। एंड बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन तो 3 ही वर्ड है ना, टुडे इज संडे 3 ही वर्ड तो है, तो बाकी 4 में फिल क्या करेंगे, बाकी 4 में 0 फिल करेंगे। फाइन, दिस इज नोन एज जीरो पैडिंग। इससे क्या होता है, यू विल बी एबल टू नॉर्मलाइज और यू विल बी एबल टू आई एम ट्राइंग टू से कि आप बराबर कर पाएंगे सबका लेंथ को। एंड व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन व्हेन द लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सेम थ्रूआउट, there are possibilities that you will get much better accuracy। ठीक है, तो एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में जीरो पैडिंग करना एसेंशियल है, जिसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जीरोस ऐड कर दे रहे हैं जहां पर भी यू फाइंड दैट द नंबर ऑफ वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ताकि सबका लेंथ बराबर है। ओके, ये समझ में आया? Yes, sir. Okay, so this is something with respect to zero padding. The next thing that we can discuss with respect to recurrent neural network is that technique। ये जो टेक्स्ट से वेक्टर हम लोग करते हैं, है ना, टेक्स्ट से वेक्टर बनाते हैं, यहाँ पे भी टेक्स्ट से वेक्टर बनाते हैं। So there is a technique involved here. There is a process which is known as word to vec. So we in short write W2V here. Okay. तो W2V क्या होता है उसको समझेंगे। Okay. So just give me a second. Fine. So let us discuss that technique which is known as word to vector, which is also known as W2V technique. Okay. Before I go to word to vector, it is essential for you to understand something known as a vocabulary. Okay. ये vocabulary का concept and all ये सब कुछ फिर से NLP में भी आएगा। इससे एक advanced topic है which is known as TF-IDF. That will come in picture when you discuss about NLP. But वहाँ पे TF-IDF को समझने के लिए word to vector समझना जरूरी है। So that is why I am not discussing that right now। TF-IDF उसको बाद में discuss करेंगे, पहले word to vec समझ लेते हैं। Okay. So in case of word to vec, what we do is we convert the text into, I can say, numerical format or vectorial format. Okay. So before we do that, it is essential for us to understand something known as a vocabulary. Vocabulary क्या होता है वो समझना जरूरी है। Okay. So I will come to vocabulary, but before that let us take one example जिस statement को कि हम लोग convert करने वाले हैं। Okay. So मान लो यहीं से कोई statement उठा लेते हैं। Let's say today is a holiday, या मान लो हाँ कुछ भी ले लेते हैं, any statement। Let's say I am planning to visit his house tomorrow। ठीक है, ये एक statement है which I am giving as input। Fine. And what is my objective? My objective is to convert this text information or this text corpus into a numerical format। And उसके लिए मेरे को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? मेरे को जरूरत पड़ेगा something known as vocabulary। Now what is a vocabulary? Vocabulary, it is a collection, I would say, collection of 10,000, you can say 20,000
or even 30,000 at times. ऐसा कुछ लिमिट नहीं है. 10,000, 20,000, 30,000 most frequently used words. Okay, in whatever language you are talking about. So if you're talking about English, तो English में most frequently used words जो होगा उसका एक culmination, एक collection को हम लोग vocabulary बोलेंगे. Similarly, अगर Spanish का बात कर रहे हैं, Dutch का बात कर रहे हैं, जो भी language you are talking about, सब में objective remains the same. Vocabulary, what is it doing? It is just going to have a collection of these many words. Okay, तो एक छोटा सा vocabulary बनाते हैं for our understanding. Let's say this is the vocabulary that we have. Okay, अब देखो इस vocabulary में you will have two aspects. Okay, इस vocabulary का दो aspect होगा. क्या क्या? पहला होगा the information, okay, or let's say the name, and दूसरा होगा index value. Fine. So name and index value. These are the two things that we will be having. Now, यहाँ पे as I am saying that you are going to have most commonly used words or most frequently used words. कुछ भी आ जाएगा, जैसे मान लो a आ गया, an आ गया, the आ गया, okay, I आ गया, am आ गया, ठीक है, planning का plan आ गया मान लो, ठीक है. I'm just writing these words somewhere or the other. ठीक है, his आ गया, her आ गया, him आ गया, कुछ भी आ गया. Okay, house is there, today आ गया, tomorrow आ गया, कुछ भी आ गया. Fine. So just a second. House के बाद I'm writing today, tomorrow. Okay. So कहने का मतलब है कि the most commonly used words which are there in your English statement, all of them are going to be a part of this vocabulary. अब जरूरी नहीं है कि इस vocabulary के अंदर, because see, it is having 10,000, 20,000 words, that is fine. But it is not essential that all the words which are there in your input statement, they will be a part of your vocabulary. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. For instance, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करना चालू करें, तो मान लो A का इंडेक्स पोजीशन है 1, N का है मान लो 12, D का है 25, I का है 27, M का है 100, प्लानिंग का है मान लो 255, His का है 273, ओके, हर का है मान लो 285, हिम का है 289, हाउस का है मान लो 764, टुडे का है 1173, टुमारो का है 1885, कुछ भी. Okay, so this is what we are having. Different words are there and associated index values are also there. कभी कभी क्या होगा कि you will not find the word which is there in your input which is also a part of your vocabulary. दोनों मतलब vocabulary में ऐसा word हो जो आपके input statement में है, ये जरूरी नहीं. कभी कभी होगा that you will not find that. For instance, here also यहाँ पे you will find that this word visit, okay, visit is not there in your vocabulary. Okay, I have intentionally not written that just to make you understand. तो अगर ऐसा कोई word है in your input statement which is not a part of your vocabulary, तो क्या करेंगे? We will try to understand. Okay, so यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Any questions till now? No. I'm able to understand. Okay, ठीक है. So हाँ ठीक है. So once we have constructed this vocabulary, what we will do next is we will be assigning the index position of all these words to the designated position. जैसे कि मान लो I am planning to visit his house tomorrow लिखा हुआ है, तो I का जो भी index value है वो हम लोग लिखेंगे. Okay, what is the index value of I? 27. फिर am का क्या है? 12. फिर
प्लानिंग का क्या है 255, फिर 2 का क्या है 2 है कहीं लिखा हुआ, 2 भी कहीं नहीं लिखा हुआ है. सो लेट अस गिव सम स्पेस हियर फॉर द टाइम बीइंग 2 के लिए. विजिट भी नहीं दिया हुआ है, विजिट के लिए भी स्पेस दे दो. हिज का दिया हुआ है इंडेक्स वैल्यू, यस 276. सो लेट अस से 273, सॉरी 273 है. सो हिज. देन हाउस में क्या है 764. सो 764 एंड टुमारो का है 1185. So this is what, this is the vectorial representation of your I would say text data. तो ये text को क्या कर दिया हम लोग vectorial representation में convert कर दिया. But there is still some problem. What is the problem? The problem is that you are having few words which are not a part of your vocabulary, जिसके चलते कि ये बीच में एक gap create हुआ है. तो always remember when you have this kind of a gap, okay, जिसका मतलब ये है कि आपके पास वो वर्ड्स अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट वी डू इज वी राइट UNK हियर. सो UNK लिखेंगे 2 के लिए एंड UNK लिखेंगे विजिट के लिए. ओके, UNK मतलब अननोन कैरेक्टर और अननोन टोकन. टोकन क्या होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो फॉर द टाइम यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड UNK मतलब अननोन कैरेक्टर. जो उसको नहीं पता है वोकैबुलरी के अंदर जो नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज UNK. बाकी जो है उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे और उसको यहाँ पर लिख देंगे. समझ में आया ये चीज? समझ में आया वर्ड टू वेक्टर, हाउ द अल्फाबेट्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू वेक्टोरियल फॉर्मेट? yes sir. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. अब स्पेसिफिकली अगर RNN के बारे में बात किया जाए तो there is a drawback of RNN which is known as long term dependency. ठीक है, long term dependency, this is a drawback of your RNN. कहने का मतलब है कि long term dependency जब RNN में आता है, at that point of time RNN is not able to show you the accuracy what it is expected to show. क्यों ये होता है? We will try to understand. And what is long-term dependency? We will try to understand. So usually long-term dependency will occur when the length of the statement is very huge. Okay, मान लो कोई एक ऐसा statement you are giving as input which is having 20 character 20 words. ठीक है, तो because the length is very huge, number of words is very big in number, that is why क्या होता है कि RNN जो पहला का वर्ड्स है, पहले जो वर्ड्स आया था उस सबको भूलने लगता है. ओके, इट इज नॉट एबल टू recapitulate the information which was there stored in the initial words of the given statement if the length of the statement is very huge. ठीक है, that is known as long term dependency. अब ऐसा होता क्यों है? This usually happens because of limited memory space of RNN. तो limited memory, ठीक है, RNN का लिमिटेड मेमोरी. जैसे मान लो आपके पास एक SD कार्ड है. ओके, यू आर हैविंग सम external data card or whatever you are having SD card with you. Okay, so SD card is let's say of 16 GB, and if you are trying to give more and more information to that SD card, मान लो you are trying to add some information which is more than 16 GB, या मान लो 16 GB भर गया, then also you are trying to give more and more information to that pen drive or that SD card, whatever. So eventually what will happen is that it will not be able to register those information and it will show you कि यार मेरा पूरा storage full हो गया है, right? वही चीज RNN में भी होता है, because RNN, the cell of RNN is having a peculiar size. ये एक specific size का बना हुआ होता है. Okay, so it is not possible for you to keep on adding information one after the other. Also, आप एक बार में बहुत सारा information अगर दे रहे हैं, chunk of information if you are giving at a time, at that point of time also it will not be able to process the output properly, and that is why it will be able to I would say it will
come across something known as long term dependency, जहाँ पे कि जो previous information है उसको वो भूलने लगेगा. Fine. So this is the simple idea of long term dependency when the length of statements are very huge. So length of statements will be huge. Okay. Length of statement अगर huge होता है तो क्या होता है? Long term dependency आता है because you are having a limited memory space, ठीक है, of RNN, and because the space is limited, you cannot keep on adding information just like that. Fine. तो ये तो इसका ड्रॉबैक है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी. बट ये ड्रॉबैक जब आया तो इसको ठीक कैसे किया गया? दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो in order to tackle long-term dependency, the researchers they came up with this idea of LSTM GRU. Okay. The researchers they came up with this idea of LSTM and GRU. LSTM stands for long short-term memory and GRU stands for gated recurrent unit. ठीक है. तो instead of using conventional RNN model or conventional RNN cell, what we will do is we will be using LSTM cells here. Okay, we will be using LSTM cells here or GRU cells. इसको use करेंगे हम लोग. क्या benefit होगा? That is something which we are going to understand. Fine. So let us try to understand that aspect here. ठीक है. Let us discuss that यहाँ पर. Fine. So what happens in LSTM and GRU is something explained via your whiteboard analogy. Okay. ठीक है. तो ये व्हाइट बोर्ड एनालॉजी क्या कहता है? व्हाइट बोर्ड एनालॉजी में बेसिकली रिसर्चर्स व्हाट दे डिड इज दैट इन देयर लैबोरेटरी, मान लो उनके पास एक ऐसा व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, ठीक है, इस तरह से एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था उनके पास. व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड कमिंग टू दिस व्हाइट बोर्ड एंड दे स्टार्टेड स्क्रिबलिंग सम इंफॉर्मेशन हियर. ओके. अब देखो इस व्हाइट बोर्ड का एक स्पेसिफिक साइज है ना, इसका ये हाइट, इसका ये विड्थ, एक स्पेसिफिक साइज का ये व्हाइट बोर्ड है. ओके. ये पूरा एक्सटेंड हुए जा रहा है ऐसा तो है नहीं, ये एक स्पेसिफिक साइज है इसका. ओके. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड राइटिंग समथिंग और द अदर हियर. मान लो दे आर राइटिंग मशीन लर्निंग, they are writing NLP, somebody is writing computer vision. Okay, then somebody comes, he or she writes deep learning, somebody writes math, somebody writes statistics, somebody writes Python. Okay, कहने का मतलब है कि people started coming and they started writing different things here and there. अब कुछ देर के बाद क्या हुआ कि आपका जो भी मॉडल था, ओके, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ मॉडल, अच्छा जो भी आपका ये व्हाइट बोर्ड था, इसमें स्पेस ही नहीं बचा कुछ भी लिखने के लिए. ओके. द स्पेस वाज नो मोर अवेलेबल फॉर देम टू राइट एनी न्यू इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो अब जब जगह ही नहीं है तो कहाँ पे लिखेंगे? लिखना तो है, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए तो बहुत इंफॉर्मेशन है. सो दे डोंट हैव स्पेस for writing that down. So what they will do is they will try to erase some part of this whiteboard, है ना. ऐसे ही टीचर लोग भी पढ़ाते हैं आपको, व्हाइट बोर्ड में कुछ लिख दिया, फिर उसको इरेज कर दिया, फिर कुछ लिखे, फिर इरेज किया, फिर कुछ लिखे, लाइक दैट. सो वही एनालॉजी यहाँ पे भी फॉलो किया गया था. ओके. एंड थ्रू दिस व्हाइट बोर्ड एनालॉजी they came up with 3 very important postulates which became the breeding ground for your, I can say, LSTM and GRU. What are the 3 different postulates?
the three different postulates were पहला था selective read, दूसरा क्या था selective write, एंड तीसरा क्या था मोस्ट इंपॉर्टेंट selective forget. ठीक है. So three important postulates were given from this whiteboard analogy. What are they? Selective read मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी मशीन लर्निंग थिंग, सो मशीन लर्निंग में देर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है, रैंडम फॉरेस्ट है, multiple other algorithms are there, decision trees are there, logistic regression is there, KNN is there, K-means is there, multiple algorithms are there. But what we will do is we will be doing selective reading. कहने का मतलब है only those algorithms we will try to learn जो हम लोगों के लिए important है, जो हम लोगों को नौकरी दिलाएगा. Okay, इस टाइप से. So there are chunks of information available, but what you are going to do is you are not going to consider the entire information available. Okay, you will partially be doing some sort of scrutinization there. Okay, you will be selective reading. You will not be reading anything and everything. थोड़ा थोड़ा read करेंगे and then we will be proceeding. ठीक है. Selective write का मतलब क्या है? Selective write का मतलब है कि जो भी read किए जरूरी नहीं कि सबको यहाँ पे लिख दो. ओके, उसमें भी selective काम करो. ओके, वहां पे भी some sort of scrutiny करो. And then last part is selective forget. कहने का मतलब है जो भी लिखे हैं उसके बाद उसको हटा दो. एक बारी लिख दिए, एक बारी प्रोसेस हो गया, एक बारी एक्यूरेसी आ गया, उसके बाद you can remove that so that the new space gets created for new information to get registered here. क्योंकि you can see size of the whiteboard is limited, है ना? So because the size is limited, you cannot go ahead with anything and everything information which is there with you. So आपको क्या करना पड़ेगा? As I told you, erase करना पड़ेगा, है ना? white board का कुछ पार्ट को erase करेंगे. जैसे मान लो यहाँ पर white board का ये पार्ट को I am erasing, okay, and यहाँ पर कुछ नया information लिख दिया जाएगा. Fine. कुछ नया information लिख दिया जाएगा. फिर ये जगह you will find कि fill हो गया. Then what we will do? We will target this part maybe. Okay, we will target this part. And फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरा जाएगा, whatever. ठीक है. So what we are doing is we are selectively forgetting also, or you can say we are selectively removing the information which has already been understood or which has already been processed. Okay, that is the idea of whiteboard analogy. और यही तीन कॉन्सेप्ट को जोड़ करके हम लोग का आइडिया बना किसका? LSTM and GRU का. यही तीनों से क्या डेवलप हुआ? LSTM and GRU. These two things came into picture. Fine. ये तीन चीज समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. So this is what we have: selective read, selective write, and selective forget. So अगर हम लोग बात करते हैं selective read का, तो एक सवाल आता है कि सर इसको selective read किया कैसे जाएगा? तो देखो यहाँ पर whenever you are talking about selective read, what you will do is you are मतलब selective read मतलब क्या? You will only be considering important information, है ना? अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? तो जब selective read करते हैं तो what we do is we ignore the stop words. ठीक है. We will ignore the stop words. Again ये जो stop word term है ये फिर से NLP में आएगा. So you can just try to understand that अभी भी, and फिर से ये stop word वहां पर भी आएगा. What are stop words? Stop words are nothing but connectors, जो दो तीन स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है या एक ही स्टेटमेंट को एक मीनिंगफुल कनेक्शन देता है. ठीक है. What I'm trying to say is, जैसे मान लो this is the word that you are having, this is the statement that you are having. Okay, मान लो I'm talking about statement 1 now. Okay, तो यहाँ पर the connectors are is ये सब आपका connectors है. So whenever you are performing selective read,
you will ignore these connectors क्योंकि ये connector actually कुछ contribution नहीं कर रहा है आपके output में. Okay, these connectors actually are not having any contribution whatsoever in the output of your model. Okay, that is why we will try to ignore these stop words as much as possible. Similarly, अगर statement 2 को consider किया जाए, this is a stop word. Similarly, यहाँ पे this is a stop word, this is a stop word. Okay, even this is a stop word. So what you do is you try to ignore the stop words because they are not very significant in calculating the accuracy or in giving the output of your model. तो selective read में उस तरह से हम लोग proceed करते हैं. Then selective write करेंगे and selective forget करेंगे. This is the entire idea of your RNN that we have. So RNN में कोई doubt है तो you can ask me. There is one more topic that we have to discuss, which is known as applications of RNN. So that is something that I will do after this. Just take a minute's break and tell me अगर आज के क्लास में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो. Sir, Yeah, Ravi. yeah. So is zero padding just like when we try to merge the two different sizes of what is this the These CSV input file? sequences, huh? Yeah, today so where there you get NNN kind of thing, right? So when we merge two different kinds of shapes of CSV files or in pandas, so we get, is it kind of that kind of function is padding doing like हाँ each मतलब you can relate it with that as well, but उससे better होगा if you try to consider it as different statements only. क्योंकि pandas में you are talking about tables, यहाँ पे you are talking about statements. तो kind of if you want to understand it in that way कोई दिक्कत नहीं है, you may do that. But एक better understanding होगा that if you are having multiple statements with different length of statements. जैसे मान लो कि if I am speaking a statement 2-3 words का, and then you are giving me a reply of let's say 1 word answer you are giving me. So if we are trying to register this conversation between you and me, okay, in some kind of program, so because I am saying 3-4 words or 2-3 words, you are giving me 1 word answers, let's say. So what we will do is we will try to zero pad the statements so that we have a uniformity throughout, even though the last part of your statements will be accompanied by zeros only, but the objective is that length of the statements should be same. See, okay, okay, sir. anything else? Just have a look. No, sir, as of now I don't have any. Yeah. Okay, ठीक है. So this is with respect to your RNN. We will try to understand the different applications of RNN now, and फिर the next part. Um, what is your syllabus? Let me just check your syllabus once. Give me 2 minutes. Then we will proceed.
Fine. So according to your syllabus, if I talk about primer for NLP, most of it is done. We are done with deep learning introduction, neural network architecture, gradient descent, feed forward neural network, loss function. लॉस फंक्शन वही था आपका जो लॉस कंपोनेंट को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज दी पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स वी जस्ट डिस्कस्ड. देन बैक प्रोपगेशन डिस्कस कर चुके हैं. एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट एंड वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट हैज टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ. देन LSTM एंड GRU आई टोल्ड यू, उसका जो इंट्यूशन है, सेलेक्टिव फॉरगेट, सेलेक्टिव रीड, ऑल दीज थिंग्स. फाइन. सो ये था. And then so NLP comes into picture, so I will come to that. But prior to that, let us understand the problems of exploding and vanishing gradient descent. Okay. Apart from that, what else do we have? Okay, fine. So this is more than sufficient. Let us discuss about vanishing and exploding gradient descent. So basically क्या होता है, देखो, vanishing and exploding gradient descent. Okay, again we have discussed this, but formally अभी थोड़ा सा एक बार और discuss कर लेते हैं because it is explicitly mentioned in the syllabus. तो क्या होगा whenever you are talking about gradient descent? Let's say we are talking about conventional vanilla gradient descent. Okay, we are here, or sorry, we are here, A पर हैं. Okay, and we have to reach at G. Okay. When you are talking about vanishing gradient descent, what happens is that the value of alpha will be very, 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 very small. Okay. Because of that, what happens is the time taken by you to reach from A to G will be huge. And उसके चलते कभी-कभी क्या होगा कि in between only the track or the flow will get diminished or it will get vanished. तो उससे चलते क्या होगा कि somehow you will not be able to reach at the global minimum. Okay. अगर global minimum पहुंच गए, then that is not vanishing gradient descent. अगर gradient descent का जो alpha parameter है वो बहुत ज्यादा छोटा रहा, इतना छोटा कि वो बीच रास्ता में ही vanish कर गया, then that is known as vanishing gradient descent, when you are not able to reach at the final minima at all. Fine. Similarly, exploding में क्या होगा? I guess you are able to understand now. You will be able to understand by yourself. अगर exploding का बात किया जाए, you are at A, you have to reach at G. यहाँ पे क्या होगा? Because we are talking about exploding gradient descent, यहाँ पे alpha का value बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. इतना बड़ा होगा कि the step size will be इतना huge that maybe you will be skipping this position of gradient descent altogether. आप यहाँ से सीधे यहाँ skip कर गए. So you have missed that part of gradient descent. फिर मान लो यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ try किए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए. इस टाइप से ये flow होते रहेगा. But somehow you will never be able to reach at the global minimum position. And if that is happening because of very huge value of alpha, that is known as exploding gradient descent. दोनों cases में एक ही चीज हो रहा है, that you will not be able to reach at the global minima, but approach दोनों में अलग है. Vanishing में alpha is too low. Okay, alpha is too low, and यहाँ पर alpha is too high. ठीक है. जब alpha बहुत बड़ा होगा तब भी you will miss the gradient or the global minima. And if the value of alpha is very low, तब भी there are chances that before reaching at the global minimum, your gradient component will vanish. ठीक है? This is what you have.
ये दोनों समझ में आ गए? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट है इस दोनों में? No, sir. It's fine. No. Okay. So this is what we have. The next thing that we can discuss today, I will not start with NLP आज, so that you are able to understand and digest RNN properly today. Next week में हम लोग NLP start करेंगे. आज बस we will be discussing about the applications of NLP and RNN. दोनों के applications के बारे में बात कर लेते हैं. And next week से we will be discussing about NLP formally. Right. So देखो, what are the different applications? Okay. So the first and best example is your text analytics, which in layman term is also known as sentiment classification or sentiment analysis. दूसरा application है your Alexa, obviously. Alexa हो गया, Siri हो गया, okay. Your Google Assistant हो गया, right? Third application is your chatbot, very important nowadays, right? Then you have Google Translate, which basically uses the technique known as machine translation. Okay, it uses the concept of machine translation. And finally, you have something known as name entity recognition. Fine. These are most commonly used applications of NLP and RNN, you can say. इसमें से Alexa कैसे काम करता है, क्या करता है, that is something which we have already seen, है ना? Text analytics और sentiment analysis कैसे काम करता है, let us try to understand. For example, यहाँ पर क्या होगा, you are trying to make out something, or you are trying to understand the meaning or the sentiment or the emotion from your text. Simply वही चीज हो रहा है यहाँ पे. कहने का मतलब है कि if you are having statements, or let's say if you are watching a movie and if you are giving some review, okay, so review क्या होगा, either एक positive review होगा और एक negative review होगा, है ना? मान लो there is a person who says that the movie was awesome, there is another person who says that the movie was boring, ठीक है? तो two different people, two different mindset, two different genre, and they are giving two different kind of reviews. So यहाँ पर for you and me it is very easy for us to understand कि हाँ यार, ये पहला इंसान जो दिया रिव्यू वो एक पॉजिटिव रिव्यू था, दूसरा इंसान जो दिया वो नेगेटिव रिव्यू था. But how computers are going to understand that, or how our algorithm is going to understand that? That entire thing comes under the study of NLP, which is known as text analytics, जहाँ पर कि हम लोग text से, और you can say रिव्यूज से एक एनालिसिस बैठाते हैं कि ये पॉजिटिव एनालिसिस है या पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है. एंड दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल दीज डेज. फॉर एग्जांपल, if you talk about Reliance Jio specifically, so the year when Jio as a smartphone was launched, or even before that smartwatch thing, when the SIM was launched, so हम लोग सबको पता है कि Reliance gave फ्री इंटरनेट, एक तो हाई स्पीड इंटरनेट, ऊपर से फ्री इंटरनेट दिया था बहुत टाइम के लिए. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर प्रेजिंग मुकेश अंबानी अ लॉट. ओके, एवरी टाइम एवरीवेयर पीपल वर प्रेजिंग हिम अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज काइंड गेस्चर. ठीक है, उसके चलते क्या हुआ कि द reviews that were given or that were posted for your Jio as a company or as a brand was very positive in the market. And उस चीज को एनालिसिस किया कौन? अब देखो, अगर मैनुअली एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे तो it will take years for us to do that. But again, अगर उसको ऑटोमेट कर दिया जाए
using text analytics process. It becomes simple and less time consuming. So यही application वहाँ पे use किया गया था sentiment analysis का, and the reviews which were given by people, they could easily be classified into positive review or negative review, and people usually found कि the reviews which were given were usually positive only क्योंकि सब कोई खुश था उनके इस काम से. ठीक है. So that is your text analytics. Fine. Alexa Siri क्या होता है वो हम लोगों को मालूम ही है, so I'm not going into that. तीसरा है आपका chatbot. अब chatbot क्या है? Again, you are aware of that, I guess. So chatbot में क्या होता है कि nowadays chatbots are deployed on different platforms, be it Zomato, HDFC Bank, Walmart, जहाँ पे भी देखो आजकल chatbots are there. So what is the objective of chatbot? The chatbot is nothing but a program or an algorithm wherein you are actually talking to a program only or a computerized algorithm only, but the way how that algorithm is responding to your queries or your questions is so human like that you or me, we will not be able to understand कि हाँ हम लोगों का बात एक actual इंसान से नहीं बल्कि एक programmed software या एक programmed algorithm से होता है. ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ चैटबॉट, जहाँ पे कि हम लोग इंटेंट एंड एंटिटी के बारे में बात करते हैं एंड वी गिव मल्टीपल इंफॉर्मेशन, और मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक ही इंफॉर्मेशन को मल्टीपल वेज में बोलते हैं हम लोग. वी गिव दैट एज इनपुट सो दैट द एल्गोरिदम गेट्स ट्रेन्ड वेरी नाइसली. ओके, फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर नेम, ठीक है, so I will ask you, I can either ask you what is your name, or I can ask you what is your let's say what do people call you, ठीक है, or I can ask you what is written in your identity card or your Aadhaar card, what name is mentioned in your Aadhaar card, ठीक है. So similarly I can ask you a question also like is your name Ravi, ऐसा कुछ. तो कहने का मतलब है कि every time the four examples that I gave you, एवरी टाइम माई ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को पता करना है कि आपका नाम क्या है, बट द वे हाउ आई एम डूइंग दैट 4 times इज डिफरेंट इन इटसेल्फ. वो अपने में ही एक अलग तरीका है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग इज योर नेम रवि, फिर आई एम सेइंग व्हाट इज योर नेम, फिर आई एम आस्किंग व्हाट इज द नेम मेंशन्ड इन योर आधार कार्ड. इस टाइप से ऑब्जेक्टिव सेम ही है. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम, बट द वे हाउ आई एम आस्किंग इज डिफरेंट. इससे क्या होगा कि चारों पांचों केसेस में आप क्या करेंगे? आप आउटपुट तो एक ही देंगे. आपका नाम रवि है तो यू विल गिव योर आउटपुट एज सेम ओनली, रवि ओनली. बट because we are giving so many different ways of asking the same question, what happens is the algorithm gets trained very nicely, and this is usually what we find. अगर हम लोग बात करें एक इंसान का, तो एक इंसान ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्रामेटिकली वे में वो बात करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, इट इज नॉट एसेंशियल दैट योर फ्रेंड माइट आस्क यू व्हाट इज योर नेम. ही माइट आस्क यू दैट इज योर नेम रवि. सिमिलरली आपका लेट्स से आप किसी लेट्स से बैंक में गए कुछ अकाउंट ओपन करने के लिए या समथिंग लाइक दैट, सो दे विल आस्क यू व्हाट इज योर आधार नंबर, व्हाट इज योर नेम मेंशन्ड इन द आधार कार्ड, समथिंग लाइक दैट. सो all of them are asking you the same thing, but the way they are asking is different. वही concept यहाँ पे भी chatbot के केस में implement किया जाता है. Okay. Similarly, अगर Google Translate का बात किया जाए, you have used Google Translate also. So Google Translate में क्या होता है? You are translating one language to another. Simple as that. English से हिंदी, हिंदी से मराठी, मराठी से तेलुगु, whatever you have to do, you can do that. Okay, that is Google Translate. And finally, fifth application is your name entity recognition. अब name entity recognition मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है. अब नेम हो सकता है किसी कार का ब्रांड हो, वो हो सकता है किसी इंसान का नाम हो सकता है किसी बहुत बड़ा बिल्डिंग का, लेट्स से कोई हिस्टोरिकल प्लेस वाला कोई बिल्डिंग का नाम हो. ओके, नेम मतलब नेम. ओके, इस टाइप से. तो नेम हुआ, एंटिटी हुआ, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल let's say I have something. For example, let's say I will say that Shyam works at GDC, or let's say Shyam works at Google Developers Hyderabad. ठीक है, तो यहाँ पर there are different names. For example, Shyam is a name, Hyderabad is a name, Google Developers is a name. Okay, so these are different names, and that is why whenever you are performing name entity recognition on such statements which have specific names also,
तो वो नेम जो पार्ट होगा, नेम वाला पार्ट होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा. That will be the output basically. Okay, this is what we have. समझ में आया? Yes, sir. Fine. So these are the different applications of NLP that we have, and I will try to show you at least इसमें से एक दो तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे जो भी सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ होगा, and then whatever queries you might have you can ask me. तो आज के लिए I will keep it till here. कोई डाउट है तो you can ask me. अगर आज की क्लास में कोई डिस्कशन करना हो या anything else that you have. So I'm okay with today's class, but I was doing one hot encoding as you mentioned in the previous lecture. Mm-hmm. So the thing was that what I did was, would you like to have a look at that? I mean, if I can share the screen. Yeah, just a second. I'll make you the host. Just a second. Yeah, you can share your screen. Hello, can you hear me, sir? Yeah. Yeah. So can you see the screen? Yeah, I can see your screen. Yeah. So what I did was that I have uploaded the file, and then now I just wanted to change this name right into the numerical value because it's a string. So I have taken the pd.get dummies. Then I have taken the name and then converted it into numerical values, zeros and ones, and then I've Mm-hmm. merged it with A. So after I merged it with A, and then I have to remove the name, right? Drop the name, Mm-hmm. and then I did drop the name. And the other things, like they have said that there is some kind of error if we had to put all the names together to reduce that. It seems, I don't know, like in whatever I could read from the material, I found out that out of five labels we have to drop one. So there were 40, so I had to drop nine. So I did drop the nine. So my question is that, so there are many string elements, right? So name, photo, nationality, and all that. So Mm-hmm. I had to do each one separately, right? For one hot encoding to convert it into zeros and ones. So अगर if you're talking about one hot encoding individually, each and every column which has categorical variable, all of them will be converted to numerical format अलग अलग Yeah. individually. So supposing if I had to convert all of them at once, like maybe